When we talk about industry factors, the first thing that we talked about was SWOT analysis. Okay, so what SWOT analysis stands for? SWOT is strengths, weaknesses. Yes, Daniel. क्या चीज नूर भाई? Sorry. What is SWOT analysis? Strength, weakness, opportunities, and threat analysis. So It you is can discuss analysis this of in detail. Yes. internal and external analysis of Yes, internal and external. company. Then anything else? Yeah, it is done to ascertain the strategies to be taken. मतलब जिससे आपका अपना विजन वगैरह आपका अपना जो गोल है वो आप अचीव कर सकें. आपने अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ अपॉर्चुनिटीज को देखना है. मतलब इससे आप एनालिसिस करने के बाद अपने लिए इजी हो जाता है कि हाउ टू डिवाइस योर स्ट्रेटजी. Okay, so after SWOT analysis, we would devise this competitive strategy, right? Which relates the organization to its environment. Okay, so this would be dealing with returns on investment. Then how superior returns can be achieved. And how those can be achieved. First is like cost leadership. Second, by providing a differentiated product. Third, focus or targeting a mass market or a small part. Okay, then we have value chain analysis. Now, what does this deals with? I think in this we analyze the cost of different the cost that we are incurring on our product at different stages of our supply chain. So what we do is we assess the value and try to minimize the cost on those steps to gain the maximization of the profit. Okay, so we have what? Primary value chain, and then we have secondary value chain. What is the secondary value chain? These are the basic support activities. Which are necessary for the primary value chain. So what value chain includes? क्या क्या आता है इसमें? रॉ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कह लें, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो गया. ओके, ऑपरेशंस भी आ गया. बिल्कुल, ऑपरेशंस जहाँ टच लेबर वगैरह है वो सारा काम. एंड अगेन मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का काम आ गया. ओके, तो मार्केटिंग एंड सेल्स हो गया. ये आई थिंक ये प्राइमरी एक्टिविटीज है.
और सर्विस हो गई ना. सर्विस भी हाँ ठीक है. ओके, सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटीज क्या क्या होंगी? HR फंक्शन, एडमिन फंक्शन, लीगल डिपार्टमेंट. ओके, तो कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर कह लिया. टेक्नोलॉजी कौन से था? डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी भी होगी. ठीक है. परचेजिंग वगैरह, परचेजिंग लिख रहा हूँ मैं. Okay, this is the value chain. The last that we mentioned was the five forces model. What are the five forces model? यार ये भी पढ़ा था, अब देखना पड़ेगा पोर्टर्स. Threats from entrants, market entrants, threats from substitute, products or services, then we have bargaining power. Recall हो रहा है ना? बिल्कुल. Bargaining power of suppliers. एंड ऑफ बायर, Okay. ऑपोजिट में. Bargaining power of buyer या customer. And the next is competitive rivalry. Within the industry or market. These are the five forces that have been affecting the business. This is the end of this part.